Hello students, the question is a conducting loop is placed in a magnetic field normal to its plane. The magnitude of the magnetic field varies with the time as shown in the figure. If E1, E2 and E3 are the magnitudes of induced EMFs during the periods the time interval 0 to capital T, the time interval T to 2T and the time interval 2T up to 3T. Then option A, E1 is greater than E2 and E2 is greater than E3. Option B, E2 is greater than E3 and E3 is greater than E1. Option C, E3 is greater than E1 and E1 is greater than E2. And option D, E1 is greater than E3 and E3 is greater than E2. So the problem is based on the topic electromagnetic induction, and in particular the formula, the induced EMF formula, which is E equals to minus d phi by dt. Now we know that phi equals to BA or B dot A, and B dot A is BA cos theta. Now it is given that the magnetic field is normal to the surface of the loop. It means that the area vector and the magnetic field, they are having the same direction. And when they are having the same direction, then theta is equal to 0 and cos 0 is 1. So we can say that phi equals to BA. In other words, we can say that E equals to minus d by dt of B into A. Now there is no change in the area mentioned in the problem. The only change is the change in the magnetic field. So the higher the rate of change of the magnetic field in the particular duration, the maximum the induced EMF. So we have to check that the slope is large for which particular region. For example, if we analyze the region between 0 to capital T, then we can say that this slope is very large as compared to this slope as well as this slope. Slope is the difference between the extreme values in a particular time. Basically, it is the change in the y-axis upon the change in the x-axis. So in the x-axis, the durations are same. So we have to check that in the y-axis, the duration is maximum for which interval. So we can easily see that for the interval 0 to capital T, there is a maximum change. The slope is largest. And when the slope is largest, the EMF induced is largest. So in this way, this E1 induced in this case is largest. Now E1 largest is given in option A or option D. Now we have to check that the minimum change in B in which case. So we can easily see that for the time duration capital T up to 2T, the B is constant, the magnetic field is constant, and magnetic field is constant, it means its derivative is 0, and when its derivative is 0, then the induced EMF is also 0, and in this case we can say that the EMF is 0. So E2 is equal to 0, it is the minimum value. So E2 minimum value is in the case of option D. So option D, E2 is the minimum, E1 is maximum, and E3 is in between. The induced EMF is basically induced EMF is greater than E2 but less than E1 because the slope is less as compared to this slope. In the first interval, the slope is large. In the last interval, the slope is less. So E3 is less than E1, but E3 is greater than E2 because E2 is 0. Now, it is also important to remember that we are taking the magnitude only. We are taking consideration of the magnitude only. We are not considering this negative sign. So, the absolute value of the EMF we are going to compare here. So, option D is correct here. That E1 is greater than E3 and E3 is greater than E2. तो यहाँ एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कंडक्टिंग लूप है जिसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है. कंडक्टिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है. मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के नॉर्मल है और हम ये भी जानते हैं कोई भी पर्टिकुलर लूप अगर है तो उसका एरिया वेक्टर उसके नॉर्मल होता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं दैट द एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम एंगल है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाता है. यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ में 3 डिफरेंट रीजन्स शो किए गए हैं. ये ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के बीच में है. इस तरह से शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है और उस चेंज की वजह से ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल्स टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होगा बी ए के. बी ए कॉस थीटा की वैल्यू जाएगी 1 बिकॉज थीटा 0 है यहाँ पे, तो बी ए के बराबर, तो हम इसे कह सकते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी ए. एरिया के चेंज की कोई बात नहीं कही गई है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एरिया को हम बाहर पुल कर सकते हैं. इसका मतलब जो E होगा वो
मैक्सिमम होगा जिसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। तो इन तीनों डिफरेंट रीजन्स को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि स्लोप जो है वो लार्जेस्ट है फॉर द फर्स्ट रीजन, 0 से कैपिटल टी के टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट है वो मैक्सिमम है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में मैक्सिमम होगा। सेकंड नंबर पे होगा हमारा लास्ट रीजन 2t से 3t के बीच में, यहाँ पे स्लोप कम है एज कंपेयर टू द फर्स्ट रीजन स्लोप, तो यहाँ पे ईएमएफ जो होगा E3 वो E1 से छोटा होगा। और जो मिडिल रीजन है T से 2t के बीच का रीजन है उसमें B कांस्टेंट है, B में कोई बदलाव नहीं आ रहा, और अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और अगर ये डेरिवेटिव जीरो हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। सो मिडिल रीजन के लिए हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।